This is a video on endomembrane system. And ribosomes. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, it consists of membranes which are related either by direct physical continuity or transfer of membrane segment in the form of vesicles. ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स, और वो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में सारे रिलेटेड है. या तो उनमें डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टिन्यूटी है और दे आर रिलेटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ द membrane segment in the form of vesicles. If you look at this diagram, this is, I have drawn an endomembrane system. You will see all the membranes, they are related to each other either directly or through the vesicles. This is nucleus. This is nuclear membrane. This is the nucleus and the nuclear envelope. It is double membrane. This is called outer membrane and this is inner membrane. This is nuclear envelope. It is made up of two layers, or it has two membranes, outer membrane and inner membrane. Nuclear envelope is double membraned, right? So if you see here, the outer membrane of the nuclear envelope, जो outer membrane है, this is the inner membrane of nuclear envelope. This is the outer membrane. This is continuous with RER. This is my rough endoplasmic reticulum. Right? So this nuclear membrane, the outer nuclear membrane, it is continuous with the RER. And then RER is continuous with SER. This is SER. Right? And then how SER is connected to the Golgi body? The material that is to be secreted out through the Golgi body will bud off in the form of a vesicle from SER, right? And then this vesicle will fuse with the Golgi cisternae at the cis end. This is how the material is to be transported. And then from here, the material will move from one cisternae to the other cisternae. How will it move? Now this material will be budded off in the form of another vesicle from the ends of the cisternae. The material, this vesicle will fuse with the cisternae. Then how the material will move from this cisternae to this? It will be budded off in the form of a small vesicle from the ends of the cisternae. And then this vesicle carrying the material to be secreted will fuse with the next cisternae. From here it will be again budded off in the form of a vesicle. Then this vesicle will fuse with this cisternae. And then from this cisternae it will be budded off in the form of a vesicle. This is how the material is transported from one cisternae to the other cisternae in the form of small vesicles which will bud off from the ends of these Golgi cisternae. And finally from here the material is being secreted in the form of a secretory vesicle. So this is my secretory vesicle and this is my Golgi. So if you see this diagram carefully, the nuclear membrane is continuous with the membrane of RER.
The RER membrane is continuous with SER, and how SER is connected to the Golgi body through the vesicle. A vesicle will pinch off, carrying the material to be secreted. This vesicle will fuse with the Golgi cisternae, and then the material will move from one cisternae to the other in the form of small vesicles, which will bud off from these bulbous ends of the Golgi cisternae. So all the SR is connected to Golgi through the vesicle, and all these cisternae are also connected through these vesicles. The vesicle is budded off from one, fuses with the next, then buds off from this, fuses with the next, then buds off from this, fuses with the next. This is how the material is being transported. So all these cisternae are connected through the vesicles, and finally a secretory vesicle is being pinched off. So this all is your endomembrane system. So it consists of the nuclear membrane, which is directly connected to the membrane of RER, which is directly connected to the membrane of SER, which is connected to the Golgi through the vesicles, and then from the Golgi the secretory vesicle is pinched off. So this is all a continuous membrane system, from Golgi then secretory vesicle, right? Lysosome is also a part of it. Vacuole is also a part of it, because the lysosomes are also formed as secretory vesicles, so it is also a part of endomembrane system. In the plants, the vacuoles are also formed in the form of secretory vesicles, so the plant vacuoles are also a part of the endomembrane system. So this is my endomembrane system, where membranes are either directly connected or they are connected through the transfer of the vesicles. And finally you get a secretory vesicle, which is released from the cisternae at the transphase of the Golgi body. So this is all my endomembrane system, and the lysosome and vacuole will also be a part of it, because lysosomes and vacuole are also released as the secretory vesicles from the Golgi body, right? And then we'll do the plant vacuole, because it is also a part of endomembrane system. So we'll do the plant vacuole. You all know the plants, they have a big central vacuole. This is a plant cell, and about 90% of its volume is covered by the vacuole. This is a big central vacuole. तो ये जो है मेरी plant vacuole है, and this is occupying about 90% of the cell volume, right? And this membrane of the vacuole is called टोनोप्लास्ट. इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं. और आपको वैक्यूल के अंदर क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा वाटर प्लस सर्टेन इनऑर्गेनिक आयंस लाइक पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस. यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे. यहाँ पर आपको वेस्ट मिलेगा. जो सेल है वो अपना वेस्ट वैक्यूल में स्टोर करता है. द वेस्ट इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल, राइट? अगर वेस्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा, देन इट माइट बिकम टॉक्सिक टू द सेल. सो द वेस्ट इज in plants, the waste is accumulated and stored in the plant vacuoles. And then the vacuole may have anthocyanin pigment, that gives color to flowers and fruits. बहुत सारे फूलों और फलों का जो रंग है वो एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से होता है. एंथोसायनिन पिगमेंट जो है इन फ्लावर्स और फ्रूट्स में कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन दी वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल. सो एंथोसायनिन पिगमेंट जो है it is present in the plant vacuoles and it gives color to the flowers and fruits. We had already talked about anthocyanin. It is a water soluble pigment. It is present in the vacuoles of the plant cells and it gives color to the flowers and fruits. And then many plant vacuoles, they accumulate toxic
and unpalatable substances. This is to keep the browsing animals away, or to keep the herbivores away. So it is a part of defense system that many plant vacuoles they store the toxic and unpalatable substances so that the herbivore animals cannot feed upon the plant and can destroy it, right? So the unpalatable or toxic substances are stored in the plants. Where in the plant? In the vacuoles of the plant cell. So all these things you can have in the plant vacuole. And a large plant vacuole is being formed by the fusion of small vacuoles. तो plant के अंदर आपको large vacuole नजर आती है. No? This large vacuole is formed by the fusion. It is formed by fusion of small vacuoles. और जो छोटी vacuoles है वो कैसे बनती हैं? Small vacuoles are formed as secretory vesicle from endoplasmic reticulum and Golgi body, right? So छोटी जो vacuoles है वो भी ऐसी बनती हैं from endoplasmic reticulum to Golgi body, and then from Golgi body a secretory vesicle will bud off, and this secretory vesicle can be a small plant vacuole. So the small plant vacuoles are also being formed as secretory vesicles from the endoplasmic reticulum and Golgi body. Just like other secretory vesicles are being formed by this endomembrane system, similarly the plant vacuoles are also being formed from ARIA to SER to Golgi and are secreted in the form of a vesicle. So the vacuole is also a part of the endomembrane system. And then we'll talk about the ribosomes. Ribosomes were discovered by George Palade. Ribosomes, they are present in both eukaryotes and prokaryotes. दोनों में होते हैं. Ribosomes, they have no membrane. इनके पास कोई membrane नहीं होती है. अब तक जितनी organelles अगर हमने की हैं उसको बात करें तो we talked about RER, then we talked about SER, then we talked about Golgi, then we talked about lysosome, then we talked about mitochondria, then we talked about chloroplast and nucleus. We still have to do the nucleus. Now RER हमने सिंगल मेम्ब्रेन बनाया था डायग्राम में. आप देखिए RER के अंदर ये this is all single membrane. This is all single membrane. Golgi, secretory vesicle, they're all single membrane, right? But if you look at the nucleus, it has double membrane. It has outer and inner membrane. So RER is having single membrane. SER single, Golgi single, lysosome single, but mitochondria is a double membrane structure. It has double membrane. Chloroplast has double membrane. Nucleus has double membrane. So some organelles they are bounded by single membrane, some are bounded by double membranes. The ribosomes do not have any membrane. They are found in pro as well as eukaryotes. But the ribosomes of prokaryotes and eukaryotes are different. In eukaryotes, the ribosomes are called ATS. In prokaryotes, the ribosomes are 70S. Now what is this S? S is the unit. It is called Swedberg unit. And what does it measure? Right? The Swedberg unit, it refers to sedimentation coefficient. It refers to sedimentation coefficient or
the rate of sedimentation in ultra centrifuge. स्वेटबर्ग यूनिट जो है वो क्या बताता है? इट टेल्स यू द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. राइबोसोम जो है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन, राइट. इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में राइबोसोम का जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो क्या होगा? राइबोसोम जो है वो स्लो रेट पे सेडिमेंट होता है या फास्ट रेट पे सेडिमेंट होता है. जो स्वेटबर्ग यूनिट है इट टेल्स यू द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ द राइबोसोम इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. राइबोसोम का जो साइज है वो हम मेजर करते हैं in terms of its sedimentation coefficient, at what rate the ribosome is being sedimented, right. जितना sedimentation rate ज़्यादा होगा, जितनी जल्दी राइबोसोम सेडिमेंट होगा, जितना उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, उतना ही राइबोसोम का साइज बड़ा होगा. सो मोर इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, more is sedimentation coefficient, right, more is the size of ribosome. जितना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, जितनी फास्ट रेट पे वो सेडिमेंट करेगा, इसका मतलब उतना ही राइबोसोम का जो साइज़ है वो ज़्यादा है. तो राइबोसोम का जो साइज़ है वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. किस रेट से वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में सेडिमेंट हो रहा है. इन अदर वर्ड्स उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? जितना रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा, जितना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, उतना राइबोसोम का जो साइज़ है वो बड़ा होगा. तो यूकैरियोट्स के अंदर जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो ATS है. ATS रेफर्स टू इट्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है, राइट. तो स्वेटबर्ग यूनिट जो है वो हमें क्या बताता है? स्वेटबर्ग यूनिट टेल्स अस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. इट इज़ अ यूनिट टू मेजर द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, right. जैसे मीटर इज अ यूनिट टू मेजर लेंथ, Svedberg is a unit to measure the rate of sedimentation, and through the rate of sedimentation we measure the size of the ribosome. जितना rate of sedimentation ज़्यादा होगा उतना राइबोसोम का जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा. सो ATS का मतलब इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज ATS. तो यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स हैं उनका साइज़ बड़ा है, जो प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स हैं उनका साइज़ छोटा है. एंड द साइज वी टेक in terms of its sedimentation coefficient or the rate of sedimentation. So Svedberg unit is a unit to measure the size of the ribosome in terms of its sedimentation coefficient. और जितना sedimentation coefficient ज़्यादा होगा उतना ही राइबोसोम का जो साइज है वो बड़ा होगा. राइबोसोम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स. राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है, दिस इज ATS. इसके 2 सब यूनिट्स हैं, दिस इज कॉल्ड बिगर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट. और इस बिगर सब यूनिट का जो साइज है इन टर्म्स ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, दिस इज 60S एंड दिस इज 40S. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरे राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो 80S है तो बड़े और स्मॉलर यूनिट का सम जो है वो 80 होना चाहिए, ऐसा नहीं है. इसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो 60S है, इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन 40S है, और दोनों का करेंगे तो जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो 80S है. सो नॉट नेसेसरली अगर ये 80S राइबोसोम है, इसके 2 सब यूनिट्स हैं, तो दोनों सब यूनिट्स के सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ द कंप्लीट राइबोसोम, राइट. सिमिलरली अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये प्रोकैरियोट का राइबोसोम है, दिस इज कॉल्ड 70S. दिस इज द बिगर सब यूनिट, this is the smaller subunit,
एंड दिस इज़ 50s, इसका साइज़ 50s है और इसका जो साइज़ है वो 30s है इन टर्म्स ऑफ स्वेडबर्ग यूनिट। सो राइबोसोम के जो है 2 यूनिट्स होते हैं, अ बिगर एंड अ स्मॉलर। तो जो बड़ा यूनिट होगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, छोटे वाले का कम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो टोटल है दैट शुड बी द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ द कंप्लीट राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो किसके बने हुए हैं? राइबोसोम जो है वो 2 ही चीज़ों के बने हुए हैं। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए, राइट। आरएनए कई तरह के होते हैं, यहाँ पे जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है। सो राइबोसोम को हम कह सकते हैं इट इज़ अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए, दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन। सो इट इज कॉल्ड एज अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो क्या है? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की जो सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास है। डीएनए हैज़ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को डीकोड करता है टू फॉर्म अ टाइप ऑफ आरएनए which is called messenger RNA, and then the information is decoded from messenger RNA to protein molecule. This is how the information, genetic information flows. It flows from DNA to mRNA, and from mRNA the information will flow to the protein. This is how the protein is being formed from DNA via messenger RNA. पहले DNA से mRNA बनेगा और फिर mRNA से क्या बनेगा? mRNA से the genetic information will flow to the protein. Information will flow from DNA to mRNA, and then information will flow from mRNA to the protein, right? So this is how. Now how do ribosomes, they help in the protein synthesis? The information will first move from DNA to mRNA. If you look at the structure of messenger RNA, this is a single stranded messenger RNA. And now the information has to move from this messenger RNA to the protein molecule, and the ribosomes will help. The ribosomes, they will attach themselves to the messenger RNA. These are the ribosomes which are attached to the mRNA. Right? This is how the ribosomes, they help in protein synthesis. At this step, when the genetic information has to flow from the messenger RNA to the protein molecule, then the ribosomes will attach themselves on the messenger RNA, and this is how the protein molecules will be formed based on the information which is coded in the messenger RNA. Generally, when the protein synthesis is not very active, you can have just one messenger RNA attached to the, you can have just one ribosome attached to the mRNA. But when the protein synthesis is very, very active, you can see many ribosomes on the same mRNA, and this will give a bead on string appearance. This will give a beads on string appearance to messenger RNA. आप देख रहे हैं messenger RNA has an appearance as if these are the beads on the string, right? So beads on string appearance to mRNA, this is called as polysome. So what is polysome is when you have many ribosomes on this. So the ribosomes, we always see they help in protein synthesis, but how the protein is synthesized, all the information lies with the DNA. First the information will flow from DNA to mRNA. DNA से पहले mRNA बनेगा, and then mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, right? So this is how the information is flowing. और जब messenger RNA से प्रोटीन बनता है तो messenger RNA के ऊपर ribosomes attach करते हैं,
और जब बहुत एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होती है, देन ऑन द सेम mRNA you can have many ribosome and you will have this beaded string appearance of the mRNA. This is called as the polysomes, right? So this is during active protein synthesis. जब बहुत एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होगी, राइट, तब क्या होगा? यू विल सी many ribosomes on this, right? So during active protein synthesis, many ribosomes attach to mRNA, and this will give bead-on string appearance to the mRNA. This is called as the polysome. तो DNA से mRNA बनता है, या मैं बोलूँ DNA से पहले इंफॉर्मेशन mRNA में जाती है, और फिर mRNA से इंफॉर्मेशन प्रोटीन में जाती है, या mRNA से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, राइट? और जब mRNA से प्रोटीन बनता है तो राइबोसोम्स mRNA के ऊपर आके लगते हैं, और जब एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो बहुत सारे राइबोसोम्स आके लगते हैं, एंड द mRNA हैज़ अ beaded string appearance. This is called as the polysome, right? So I hope you would have understood.